seated in their marked position. We'll begin the program in 2 minutes.
Good evening. I request the marshals of computer and mechanical engineering, please get your graduated students to be seated in their marked positions. We are opening the curtain now. Thank you. I extend a warm and cordial welcome to the Chief Guest, Chairman of Board of Governors, members of Board of Governors, office bearers of Anjuman Islam, invitees, and you all on the occasion of the 7th graduation day of Anjuman Islam's Kalsekar Technical Campus, New Panvel. This degree distribution is on behalf of University of Mumbai. We began our program with the degree distribution of School of Architecture, School of Pharmacy, and Electronics and Telecommunication Engineering students in the session 1, whose chief guest was Professor Anil D. Sahasrabuddhe, Chairman of All India Council for Technical Education, who delivered a very motivational and inspirational graduation day address via Zoom, where he spoke very highly of Anjuman Islam as a management and Kalseka Technical Campus as an academic organization for imparting quality education and achieving excellence in academia. Sir also promised to visit AIKTC personally in the near future, followed by the post-lunch degree distribution of civil and electrical engineering students, where 180 degree certificates were distributed. And for this session, it is our honor and privilege to have Sri Ganesh Deshmukh, Commissioner, Panvel Municipal Corporation at Anjuman Islam's Kalsekar Technical Campus as our chief guest. And now may I request Mujib Tamboli to introduce our chief guest for this session to this August gathering. Assalamu alaikum and a very good evening to one and all. It's my privilege to introduce Mr. Ganesh Deshmukh sir, the guest of honor for today.
Mr. Ganesh Deshmukh sir is presently working as Commissioner, Panvel City Municipal Corporation, that is PCMC. He completed his SSC and HSC from Rajaram High School, Kolhapur in 1986 and 1988 respectively. He did his BSc Agriculture from Mahatma Phule Krushi Vidyapit, which is an agriculture university based at Rahuri, Maharashtra in year 1992. He successfully cleared Super Class 1 examination conducted by Maharashtra Public Service Commission, that is MPSC, in the year 1995. Mr. Ganesh Deshmukh sir has been involved in Department of Urban Development of State of Maharashtra for last 26 years. He worked as Deputy Municipal Commissioner in Ambernath, Kalyan Dombivli, Mira Bhayandar, and Kolhapur Municipal Corporations. He was Municipal Commissioner of Kolhapur and Nanded Municipal Corporations. He also worked as Additional Commissioner of Thane Municipal Corporation. Mr. Deshmukh is an able administrator and always maintained the balance between elected representatives and the government. He was appreciated for his excellent work during COVID-19 outbreak in Panvel City Municipal Corporation area as well as in Thane Municipal Corporation area. Mr. Deshmukh defines the idea of success as success is not about getting a lot of marks. The first step to success is to identify your goals and pursue them passionately. Secondly, you have to be confident, which can be boosted by parents and teachers. The third is determination, followed by dedication. Thank you, sir, for joining us. Thank you. May I now request our Honorable President, Dr. Zahir Kazi Saab, to felicitate today's Chief Guest, Mr. Ganesh Deshmukh, sir. Thank you. So this is the third session, and in this session, degrees will be awarded to the graduates of computer and mechanical engineering. As the Board of Governor, Chairman of Board of Governor, we have Dr. Zahir Kazi Sahab, the President of Anjuman Islam with us. Most of us, and in fact every one of us, are truly acquainted with the efforts of our Honorable President, sir. He is the prominent scholar, eminent educationist, and social activist. Uh, when it comes to education, sir did his MBBS, MD, and DMRD in radiology. All these degrees sir has obtained from University of Mumbai. For further degrees, sir moved to University of Pennsylvania, where he obtained the degree of FMRI, and from MAIUM course he did from Perceptor Ultrasound, and he did it from Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, USA. After that, sir moved to India, and sir has till date practiced in the field of healthcare for almost 42 years. It's been more than 4 decades serving to the people of Mumbai and Konkan. Sir is very much dedicated now with healthcare to the cause of education. And Sir started the journey at Anjuman Islam as the elected member of the General Council. And he has been the member for almost 20 years. And then Sir became the General Secretary of Anjuman Islam between the duration of 2006-2009. And today we have Dr. Zahir Kazi Sahab as the Honorable President of Anjuman Islam. You guys have gone through this phase when it comes to education during this lockdown. And Dr. Zahir Kazi Sahab was looking onto 2 areas. One was healthcare system, and the second one was continued education. When it comes to Anjuman Islam, all of us are aware that it has got more than 96 schools and colleges, and around 110,000 students are studying. During lockdown,
What is that something we can do so that the quality of education goes unaffected to these students through around 28,000 teachers, faculties, and staff members of Anjuman Islam? Sir was continuously busy in holding meetings with the faculties, the director, principal, heads, members of Anjuman Islam, in order to ensure that the education is being given to them qualitatively, and you are one of those products. With that, Sir had been very instrumental in looking out for the destitute people who were badly affected by the corona pandemic. And Sir was very, active in giving out the Anjuman Islam School campus of Bandra. Even AIARKP was given to the municipal authorities in order to help the needy ones. And we have been instrumental, and a lot of appreciation we received for helping out people who were locked in these city areas. With that, Sir had been into a lot of social activities, including NGOs, and he is very well connected with his land, that is Goa. And not only that, at national level, Sir is acting as the Vice President of Ummeed, which is Upliftment of Minorities, Education and Economic Development. With that, he also holds the post of Vice President for Federation of All Minorities Education Organization. That's FAME. Talking about Sir's awards and achievements and affiliation, Sir has represented India at 12th Youth Goodwill Mission to Japan, and it was sponsored by the Prime Minister of Japan. He has been awarded for outstanding service in the field of medicine by Ekta Foundation through the hands of Chief Minister of Maharashtra. He has also received award for outstanding service in the field of education by Seva through the hands of Chief Minister of Maharashtra. He has been the president of various movements, especially during his college days. He was the president of Goa Medical College Student Union, and including the most famous Mumbai Cricket Association also. Okay, sir. I welcome and I request our Honorable President Sahab to address the gathering. Assalamu alaikum, namaskar, and a very good evening. This is my third address. We had a session in the morning, afternoon, and now late afternoon. We were privileged to have had the chief guest in the morning, one of India's renowned engineer, a PhD from IIT, who has been the chairman of EICT for the last 7 years, based in Delhi. He was on online, had given us a very remarkable address. We had a second session, and this is the last session that we are in. It is my great privilege and honor to address to you the young ones who have achieved remarkable success as young engineers in the Department of Computer Science and Mechanical Engineering. These are two very, very important branches in the field of engineering, demand-driven and most sought after. So you must have been the pick of amongst the students with very fantastic percentages, and that's how you managed to get in this branches. Today is your day for rejoicing. To you and your family. Your family members are here, come in large number. That goes to show how much they love you. And you owe your success to the Almighty God and then to your parents. They have looked after you since you were born till today that you have become full-fledged, remarkable graduates in the field of engineering. You owe your success to a very large extent to your parents. आप अपने माता पिता, अपने वालिदैन को दुआएं
और उनकी दुआएं आपको लेनी है, उनका आशीर्वाद आपको लेना है, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने बहुत मेहनत की आपको, आपकी परवरिश में, और आपको ये जो विद्या आपने हासिल की, तालीम आपने हासिल की। तो आज के मुबारकबाद अगर हम देने हैं तो पहले आपके पेरेंट्स को देने होंगे, आपके वालिदैन को, आपके माता पिता को देने होंगे। उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। बड़ी मुद्दत के बाद इस तरह का प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 साल बहुत मुसीबत के थे। एक बीमारी ने ऐसा असर डाला पूरी दुनिया में कि the whole world was paralyzed. And in that, the imparting of education did not cease. We adopted to a new system of virtual platform, online studies, and Anjuman's teachers during this pandemic phase imparted quality education through a different platform altogether. And you young ones, you adopted it so well. The credit also goes to you and to your faculties here, your directors, principals, and professors, and everyone. You proved to the world that we are prepared for a change. Remember, my young ones, nothing in life is constant. Only change is constant. If the change is for the good, you have to get into the mode of changing, which you have done so well today. And talking of pandemic, since we are meeting after a lapse of 2 years, we must give credit to the vibrant people of India, to those who are part of the governance, whether in the center or the state. They fought it so brilliantly. And today in the world, we are a proud nation that we produced the largest volume of effective vaccines in India. And we have vaccinated almost 200 people. As a result of the research of the scientists, we are comfortably placed today to attend a program like this. Talking of the institution which is here now, Anjuman Islam's Kalsekar Technical Campus. It is in existence for almost a decade. And when we started this campus, we hardly had handful of students. Today, we are not able to give admissions to everyone. It has made a name for itself and created a brand. And this is possible because the students and the teachers put together. अंजुमन इस्लाम एक तालीमी इदारा है, मेयारी, मिसाली और तारीखी इदारा, जिसने 150 साल मुकम्मल करने जा रहा है ये आने वाले फरवरी में. या संस्थेने 50 वर्ष सर्विस केलेली आहेत. And the founding fathers of this organization were part of the freedom struggle of India. Justice Badruddin Tayyib, the first judge of High Court, Chief Justice of High Court of British India, first Indian. He took the position of Chief Justice and he immediately granted bail to Lokmanya Tilak, which was refused earlier by the British judges. And thereafter he put his papers. He and his team were part of the freedom struggle of India. Many of our presidents were in the jails during the freedom movement. So we are nationalistic organization to the core. और हम देश की रक्षा के लिए, देश की भलाई की जो हर बात होती है वो अंजुमन से भी निकलती है. We are proud
to be an organization which is nationalist to the core. हिंदुस्तान में एजुकेशन पॉलिसी 1880 में हुई, उसके पहले देयर वाज नो एजुकेशन पॉलिसी। और लोगों से कहा गया था, पब्लिक ओपिनियन, कि पॉलिसी के कुछ खाका प्रिपेयर कीजिए। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अंजुमन प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश इंडिया द ब्लूप्रिंट ऑफ अ फ्यूचर पॉलिसी। और देशमुख साहब, आपको जान के खुशी होगी कि अंजुमन के कर्ता धर्ता ने जो पॉलिसी इनपुट्स दिए थे, totally in toto it was accepted and it became a policy of India. We were the first one in India to have started midday meals in 1895. We were the first one to start a commercial institute. I don't know how many of youngsters know commercial institute. It means Institute of Typewriters. Now you're talking of computers. Those days this was an innovative technology. And then it was a Bombay state, huge state. And in Bombay state, we were the first one in private domain to have started an institution. Artisan school in India before the Second World War was started by Anjuman Islam. So we were the pioneers in many progressive ideas in the field of education at that point of time, and we continue to do so. The living example here is AICT decided that we must have a concept of integrated technical campus, wherein more than 2 institutions be allowed to start at one go. The advantage being 40% of administrative staff common, utility areas common, and lot of facilities. What was the idea? To make it financially viable and create a technical environment. You'll be very happy the institution where you are passed out from is the only organization in India which started 3 colleges at one go as an integrated campus: College of Engineering, Architecture, and Pharmacy. And it is a success model which is talked about not in India but beyond India. And the kind of success this particular campus achieved, Deshmukh Sahab, आपको बॉम्बे यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन तब देती है कम से कम आपके 2 बैचेस पास होके निकलते हैं। अंजुमन इस्लाम को, मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड मेंबर था सेनेट का, वहां पे डिस्कशन हुआ जब नई सरकार आई आदरणीय प्रधानमंत्री की, मोदी जी की, तो एक नए सब्जेक्ट्स का पहल हुई कि विच शुड बी जॉब सीकिंग पोस्ट ग्रेजुएशन। वो नया पोस्ट ग्रेजुएशन जब शुरू हुआ, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, nobody was willing to take it, and they put it to Anjuman Islam कि you take it as postgraduate institution. And we had one of the most dynamic head of the department, Rajendra Magar, from a small town, Satara he comes from. He was the recipient of one of the best PhDs at IIT Powai at the hand of then Prime Minister Manmohan Singh. That responsibility was given to Rajendra Magar, Professor Magar. He accepted it and we started masters. In 2 years after that, the same university forced us to take PhD program in civil engineering. And we did it successfully. And it is a history created by us, that first institution in Bombay University out of 66 engineering colleges, an infant college of 10 years getting post-graduation and PhD is unheard of. And that is all because of you and the faculty here. What is the benchmark of excellence? मेयारी पढ़ाई का क्या दर्जा हो सकता है, वो कैसे? इस तरह के जब नताए जाते हैं, this kind of results when you get it. देख साहब, पेंडेमिक के दौर में IIT Powai, which is an institute of research and innovation, उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया all engineering and IITs all over India to design a drone
which will deliver 1 kilogram of vaccine to remote villages where transport is a problem. And that drone design by Kalsekar Technical Campus Engineering College got the first prize in India, and that model was accepted. That goes to show that how much of talent is there in our young ones, and how that talent is उसको तराश के हीरे को तराशने की जो खूबी है वो जौहरी को ही मालूम होती है। तो यहाँ जौहरी सब बैठे हैं, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उस मोड़ पे ले गया कि तुम कुछ अलग करके बताओ कि तुम्हारा नाम बने। ये इस कैंपस की एक हिस्ट्री रही, एक परफॉर्मन्स रहा। और ये कॅम्पस देशमुख साहेब आपले कोकणाचे एक बिझनेसमॅन आहेत दुबईमध्ये, कालसेकर साहेब, त्याने ह्या एंटायर कॅम्पसला फंडिंग करून हे कॅम्पस उभं केलं। आपल्याकडे पैसे नसते, आपण प्रायव्हेट मॅनेजमेंट आहे पण चॅरिटेबल आहेत, नॉट कमर्शियल। तर आमचे जितके प्रोजेक्ट असतात दॅट इज फंडेड बाय डोनर्स अँड फिलॉन्थ्रपिस्ट। आणि आम्हाला पैसे लोक कशासाठी देतात? आपल्यामध्ये 50% स्टुडंट जे येतात त्यांच्याकडे फीस भरायला पैसे नसतात। 60% स्टुडंट आहेत ते फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आहेत, त्यांच्या घरी कोण शिकलत नाही, आणि ते मोठे मोठे प्रायव्हेट संस्थाला कुठे जाणार, पैसे कुठे देणार फी इतकं? ते पण आपल्याकडे येतात आणि आम्ही त्यांना घेतात। आणि आम्ही गेल्या 10 वर्षात देशमुख साहेब 50 करोडचे स्कॉलरशिप गव्हर्नमेंट नॉन गव्हर्नमेंट फॉर आवर स्टुडंट्स, फॉर students from all communities, irrespective of caste, creed, religion, because Anjuman is an inclusive institution. It's a secular to the core. आणि ते आपण आतापर्यंत कायम ठेवलं आहे। और जहां गरीब बच्चों की मदद होती है, उनकी पढ़ाई नहीं रुकती। अंजुमन में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास फीस नहीं तो वापस चला जाएगा। मुझे इस अदारे की सदारत करते हुए आई एम प्रेसिडेंट फॉर लास्ट 14 years uninterrupted. I can vouch for you, there is not a single student who has gone away because he didn't have fees to pay. This is the concept. और सुनिए प्यारे बच्चों, जब आप बड़े होगे और आप अच्छा कमाने लगोगे, क्योंकि आपकी यहाँ मदद की गई थी, तो आप कोई गरीब बच्चों की जब आपकी हैसियत होगी, अभी नहीं, जब अच्छा कमा लोगे तब कोशिश कीजिए 1-2 बच्चों को आप पढ़ाइए। ये अपना सर्व का रास्ता बनाने में आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें गरीब तबके को और रूरल एरियाज में तालीम की ज़रूरत है, अच्छी तालीम की। सब हम सरकार पे नहीं छोड़ सकते, हमको भी करना है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो एक जिम्मेदारी एक गरीब बच्चे की आप लीजिए। मैं वालिदैन से भी दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं तो ज़िंदगी में एक बच्चे को पढ़ाइए, पहली से लेके उसको डिग्री में भेज दीजिए। और ये हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है, इससे बेहतरीन मुल्क कोई नहीं है। फॉर ऑल द कम्युनिटीज, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, ऑल ऑफ देम। कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत नीचे होता है जो हर परिवार में होता है। मैंने दुनिया घूमी है, आई हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड। यू विल नॉट फाइंड ए कंट्री लाइक इंडिया। दिस इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मुझे बहुत कुछ कहना था, ये तीसरी बार मैं अलग अलग रिकॉर्ड बजा रहा हूँ, क्योंकि वही बार बार बोलना मुनासिब नहीं, तो सोच रहा हूँ क्या अलग से बोलूं। सुबह में जो बोला उससे अलग हट के क्या बोलूं। जहां तक अंजुमन की बात है, एक बताता बात चलूं आपको कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच बिलीव्स, not only believes,
but acts, walks the talk. Empowerment of women. मेरे 100 इंस्टीट्यूशन में 90% आर लेडीज हु आर डायरेक्टर्स, चेयरमैन एंड हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेसेस, and they are giving a fantastic performances. 40% are girls. We have got 2 girls orphanages. I would request some of you, if you want to spend a quality time, do spend once in a year 1 or 2 hours in the girls orphanage. वहां जो वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे वो मैं बयान नहीं कर सकता. और ये रमजान में इफ्तार में अमेरिका के कौंसल जनरल आके बच्चों के साथ इफ्तारी कर ली. अगर आप एक यतीम के सर पे हाथ रखोगे तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं. तो ये अंजुमन की एम्पावरमेंट वुमेन की बात है. हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि एक वालिद 1 या 2 बच्चियों को पढ़ाई अच्छी करे, उनका घर बसाए, तो वो बच्ची आपको जन्नत के दरवाजे पे ला जाती है. तुम्हाला ती घेऊन ते सर्वोच्च द्वाराला घेऊन जातात. This is what being said. And those of you who are fortunate to have daughters, you are very lucky. They are your real treasures. So don't discriminate between boys and the girls. They deserve equal attention. क्योंकि आप बड़ी तादाद में हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ. और मैंने बच्चों को देखा है बड़े लगन के साथ पढ़ते हैं. एक मिसाल मैं आपको देता चलूं. जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ऐलानात किए, आप जानते होगा, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, स्वच्छ भारत. तो डिजिटल इंडिया का जो है, नीति आयोग ने 28 मिनिस्ट्री को कहा कि आप ऐसे प्रॉब्लम लेके आइए जो हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और 28 मिनिस्ट्रीज ने 598 प्रॉब्लम को एक सामने ले आया. और डिजिटल इंडिया के हिसाब से ये तय हुआ कि इसका डिजिटल सॉल्यूशन होना चाहिए. तो कौन निकालेगा? तो तय हुआ कि जो यंग ब्रेन्स आर द वंस हु विल come out with innovation and inventions. So they decided to have engineering, IITians and MBA students from all over India. They selected 29 cities in India, 40,000 students, 6,000 institutions. There was an elimination round, 10,000 students remain on 18 institutions. And in that, Anjuman Islam Sabu Siddiq Engineering College got the 3rd position in India. And in that group, there were a team of 5, 4 were girls and 1 boy. And 2 girls had studied from either Marathi or Urdu medium school. See, this is it. This is the benchmark of an organization's excellence. ऐसे बहुत सारे चीजें हैं. लास्ट ईयर पेंडेमिक में हमारे होम साइंस की एक साल एक लड़की यूनिवर्सिटी टॉप कर गई, वो हाफिज कुरान थी. और दूसरे साल पूजा शेट्टी करके एक लड़की थी, उसने भी 5 गोल्ड मेडल्स ले गई. 2 consecutive years यूनिवर्सिटी टॉपर्स. ये अंजुमन का बेंचमार्क है इन एक्सेलेंस इन एजुकेशन. और हम गरीब से गरीब बच्चा और कम मार्क्स वाला बच्चा को भी लेते हैं. नहीं तो बड़े इंस्टीट्यूशन चूजी रहते हैं, अच्छे मार्क्स वाले को लेके फिर अपना रिजल्ट अच्छा लाते हैं. हमारे यहाँ नहीं होता. हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम के जो बच्चे आते हैं, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में, स्किल, सॉफ्ट स्किलिंग उनका होता है, स्पोकन इंग्लिश की. जब देशमुख साहब पहला बैच जब शुरू हुआ इस इंस्टीट्यूशन का, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आप सुनिए साहब. हमको एक साथ परमिशन मिली 3 कॉलेजेस की और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका था पूरे महाराष्ट्र में. हमको प्रोफेसर लाने थे, एडमिशन प्रोसेस करना था. जो बचा कुचा हुआ माल मार्केट में था, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिला था लोएस्ट मार्क्स के, उनको सबको एडमिशन मिला यहाँ पे.
और ज़्यादातर बच्चे मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम से थे, जिनको अंग्रेजी बोलने नहीं आती, ना समझता। उन पे 4 साल मेहनत हुई। इनको टारगेट दिया गया था कि पहला बैच का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, और वो बैच का देशमुख साहब पहिले बॅचचा रिझल्ट 93% आला. त्याच्यामध्ये 80% स्टुडंट्स वेर बिटवीन 60 to 70%. So we don't pick and choose. 6 मार्क वाला इधर आ, अपना रिजल्ट अच्छा आएगा. No, we don't do that. The credit goes to our faculty. They work very hard. यहाँ के जो टीचर्स है, सुबह के 8 से 5 बजे के बाद अपना वक्त नहीं देखते, 8 बजे तक बैठते हैं, ओवर टाइम नहीं लेते, लेकिन उनकी सैलरी अच्छी मिलती है, उनको फैसिलिटीज अच्छे हैं. यहाँ आने के बाद एमई होता है और पीएचडी होता है. ये साल कितने पीएचडी हुए? 4 पीएचडी आपके यहाँ हुए. तो जो बात कही जाती, डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज टेकन एट टुगेदर. ये होलिस्टिक अप्रोच होता है. तो ये आज हम जहाँ जमा हुए हैं, वो कैंपस एक ऐतिहासिक है. और आपके बच्चे यहाँ से जाने के बाद, मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने सबके चेहरे देखे हैं. मैं एक तरफ देख के बात नहीं कर रहा हूँ, एक डॉक्टर होने की वजह से मेरी 45 साल की प्रैक्टिस है. आई कैन रीड द फेसेस. दे आर सो अलर्ट, सो अवेकन, including the parents. None of the parents are actually sleeping because a post-lunch session it is. That goes to show that you have a very bright future. I am proud that you are the products of Anjuman Islam. Those of you who want to do your masters, please come back to our director. He will help you and guide you to go. Anjuman has opened a branch in the United States of America. It's called OFA, Overseas Friends of Anjuman. It is registered with income tax. Every formality is done. And our well-wisher in the United States, for your kind information, Her Excellency, Mrs. Jill Biden, the First Lady of the United States, she is a grammar teacher. When she was a second lady, she had come to Anjuman, and we had written to her also. And she has called back, written back, do come. And the board which constituted in American chapter are all past students of Anjuman, of Sabu Siddiq Engineering College or one of our schools in Bandra. One of them is ex-chief of G Capital. Another is from Microsoft. One lady, she is the topmost anesthesiologist of America. ये हमारे बच्चे वहाँ जाके बने. Now what is the purpose of this? हमारे बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट कैसा मिले, उनको नौकरियाँ वहाँ कहाँ मिले. हमारे टीचर्स यहाँ से वहाँ जाके ट्रेन होंगे और ट्रेनर बन के यहाँ दूसरों को ट्रेन करेंगे, और फिर हमारे एलुमनाई का गेट टुगेदर भी होगा. तो एक सिस्टम भी चालू है. तो अंजुमन इज ऑन द ग्लोब टुडे, एंड आई एम श्योर व्हेन यू गो अवे फ्रॉम हियर, डू रिमेंबर योर इंस्टीट्यूट विच गिव यू क्वालिटी एजुकेशन. ये आपकी माँ के बराबर है. माँ तो है आपकी, ये माँ के बराबर है. इसको मौसी समझिए, जो भी समझिए. जैसा लड़कियां समझती मेरा मायका है, इसको मायका समझिए. लेकिन आइए जरूर, हम आपको छोड़ेंगे नहीं. आपको और भी मदद की जरूरत लगी तो आइए. ये कैंपस में इंक्यूबेशन सेंटर्स है, रिसर्च सेंटर्स है. आके यहाँ काम कीजिए, आपके प्रोडक्ट्स पेटेंट हो जाएंगे और यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त लिया. सुबह से यही बात कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से. कभी वो मुकेश की आवाज़ में, कभी रफ़ी की आवाज़ में, और कभी मन्ना डे की आवाज़ में. जैसा होता है ना, स्पीकर को अलग अलग. नहीं तो यहाँ बैठे हुए लोग बोलेंगे सुबह में मुझे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बहुत पकाया, ये बम्बैया भाषा में. लेकिन वो भी बड़े इससे, क्योंकि मुझे मालूम है इनके फितरत. एक बात बार बार कहो तो वो उधर उधर देखने लगेंगे, और बच्चे उनको देख के उधर उधर देखेंगे. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. बराबर है. अब मैं मेरी बात यहीं ख़त्म करता हूँ. मैंने बहुत कुछ कम बोला है, इसलिए बहुत ज्यादा आप याद रखेंगे. एंड माई लास्ट रिक्वेस्ट टू यू, you are a good engineers, but you must be good human beings.
You must be a devoted, dedicated Indian. Your love for your country should be there. And you strive to be a global citizen so that you can be a part of the competition. आप यहाँ से जाने के बाद नौकरी मिली, हो गया मेरा काम? बिल्कुल नहीं, आपको और आगे बढ़ना है। कुछ सालों के बाद आप ऐसी जगह जाइए, आप दूसरों को नौकरी देंगे, आप नौकरी ढूंढने के बजाय। दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, विच यू शुड डू। और आप में से हर एक ये सोचे कि मैं मेरा बेस्ट दे दूंगा और मैं कुछ अलग बन के दिखाऊंगा। इंजीनियर तो बहुत है, उसमें से आप अलग कैसे होगे? तो आपको कुछ अलग करना होगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पेरेंट्स जो जितने बड़ी तादाद में, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी मेहनत, आपकी दुआएं रंग लाई और उनके टीचर्स की भी मेहनत काम आई। आपके बच्चे बड़े होनहार हैं, उनको आप संभालिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. I request our director, Dr. Abdul Razak Honotagi, to thank our honorable president with a floral bouquet for being the best speaker in all the 3 sessions. I also request our Dean of School of Pharmacy, Dr. Sharik Sayed, to express our thanks to Akil Hafiz, sir, the Joint Secretary of Anjuman Islam, for being in the sessions. Thank you. I would now request our today's chief guest, Mr. Ganesh Deshmukh, sir, to deliver his valuable address. Honorable President, Anjuman Islamic Trust, respected directors, respected eminent persons present on the dais, students, my friends, my colleagues, parents. Before I come here, just when I enter into the campus, I will have to deliver something. Then just I was thinking what to speak with the student. Now you are the qualified and graduate one. And I'm very proud and very happy to share whatever I was planned, whatever I was thinking, totally passed by total Honorable President, sir. Same to same. Just you can think I have copied it. I don't know exactly how it becomes, how it is possible, but 100% same thing. आई डोंट नो बिकॉज तो सर आपने मेरे पूरे पॉइंट्स ले लिए, मुझे जो बोलना था बच्चों के साथ में वो पूरा ही सर ने। ठीक है, बात वही है लेकिन अलग अंदाज में भी रख सकते हैं। आपका चीफ गेस्ट हो तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा, भले ही बच्चों को डिग्री लेके जब भागना है तो फिर भी कुछ ना कुछ सुनना है। देखिए भाई, सब अभी यहाँ पे पेरेंट्स भी है, अपने स्टूडेंट्स भी है, सबने एजुकेशन ले लिया, डिग्री हासिल कर ली, ग्रेजुएट हो गए। अभी एक अलग प्राउड फील होता है कि भाई टुडे आई एम ग्रेजुएट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नॉट फॉरगेट आवर पास्ट। हमारा पास्ट क्या है? इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, एक बहुत बड़ी गरीब देश से हम डेवलप होते जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स की एक अपेक्षा थी कि हमारे बच्चों ने कुछ तो जिंदगी में करना है और खुद के पाँव पे खुद को खड़ा रहना है। कोई पेरेंट को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत के सिवा कोई पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए। पेरेंट्स के लिए मैं एक दो लाइन कहूंगा। मिट्टी के भी खिलौने सस्ते न थे मेले में, मिट्टी के भी खिलौने सस्ते न थे मेले में, घर आके रोए माँ बाप अकेले। ये हमारे पेरेंट्स की कंडीशन है।
वो मेरे भी पेरेंट्स है, आपके भी, यहाँ जितने भी रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज बैठे हुए उनके भी पेरेंट्स है। ऐसे भी हालत में हर एक पेरेंट सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो क्यों बने? क्या इंजीनियर बनने से पहले 2 वक्त की रोटी खाता नहीं था? क्या डॉक्टर बनने से पहले वो रास्ते पे सोता था? तो ग्रेजुएट होने के बाद में, लिखने पढ़ने के बाद में क्या चाहिए? सर ने जो आखिरी का सेंटेंस बनाया है, इट इज नॉट इनफ टू बिकम अ ग्रेजुएट, देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेजुएट एंड एजुकेटेड वन। हमें एजुकेटेड बनना है, खाली ग्रेजुएट बन के कुछ यूज नहीं है। तो आपको इंजीनियर नाम से बड़ा है, आपको एक इंसान करके बड़ा बनना है जिंदगी में। और मैं खास तौर पे ये जो बात आपके सामने रख रहा हूँ, ये कहने की बात नहीं है। मैं अभी डॉक्टर खालिद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, योगायोग से हमने गए 2 साल में काम किया है साथ में। तो मैं कभी भी किसी से भी मिलता हूँ तो मेरी आइडेंटिटी, मेरी डेसिग्नेशन, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं बताता। आई वांट टू फ्लरिश विथ माय ओन नेम। मुझे ये गणेश देशमुख ये नाम है ना, इसी को बड़ा करना है कि भाई नाम ही सुने तो कोई पहचान लेगा, यही बंदा होगा। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो हमारे आइडियाज है, थॉट्स है, हमारी जो बिलीफ्स है, हमारे बिलीव्ड है, जिनको भी हमारे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हमसे है, वो सब एक प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए सब ये सीखना है। एजुकेशन लेने की वजह से बहुत कुछ आता है ऐसा नहीं है। हमें ये ट्रांसफॉर्म करता है आइडियाज को। एजुकेट हो गया तो बुद्धि बढ़ गया ऐसा नहीं है, बुद्धियांक वही रहता है जो जन्मजात माँ बाप से मिलता है, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता, वो ग्रूम हो जाता है, वेल ग्रूम्ड, वेल कल्चर्ड होता है। मतलब पूरी जिंदगी भर एहसास लेने से अगर ये किताब जल्दी पढ़ ली तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस अपन 10 घंटे में भी, 2 घंटे में भी कमा सकते हैं। दैट इज एजुकेशन। उस सही मायने में उसका इस्तेमाल जब करेंगे, करना सीखेंगे, तो उसी दिन हम एजुकेटेड हो जाएंगे। तो आज जब जितने भी अपने ग्रेजुएट्स हैं, सर ने बोला है मास्टर्स के लिए आपको इनवाइट भी किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आते आते डॉक्टर खालिद साहब ने बता दिया, समवन इज सिटिंग इन द दुबई एंड गिविंग सो टू मच फॉर द सोसाइटी, सो दैट इज सेम एप्लीकेबल टू यू एंड मी आल्सो। हमें भी ये करना है। हमारे साथ में अगर हमारा हुआ है तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट सोसाइटी की ओर से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। सर ने बताया अभी, दिस इज द बेस्ट कंट्री, रियली इट्स अ ग्रेट कंट्री, वी मस्ट बी प्राउड। हिंदुस्तान, हम सब लोग साथ में रहते हैं, कितने धर्म के, जाति के, कितने कास्ट के, कितने रिलीजन के, कितने कलर के, कितने रेसेस के लोग हैं यहाँ पे, देखिए आप। तो ये होने के बावजूद भी हम लोग एकदम बंद मुट्ठी के साथ में सही में बराबर है। और इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखा जाए तो हर एक बंदे को ये कोई कास्ट से, रेस से, रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं भगवान कसम खा के अभी आपके सामने बोलता हूँ, मेरा जिंदगी के सबसे नजदीक दोस्त है शहीद अत्तार। अब इनको मालूम है सर को, तो मेरी दोस्ती हो गई तो मुझे कोई भी मालूम नहीं था वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, वो क्या है, मैं क्या हूँ। लेकिन अभी एक भी दिन नहीं जाता कि हम कहीं भी रहे तो एक दूसरे से बात नहीं करें। तो ये जो भाईचारा है, ये कायम रखना, ये कायम कब रहेगा? ये एजुकेशन का सही मायने में हम इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है वो सोसाइटी के लिए बैक कुछ ना कुछ देंगे। धर्म क्या है? धर्म कर्म ही है, बाकी कुछ नहीं है। मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में था, ये मेरा सही दोस्त, अभी जिक्र ही निकले आए तो मैं आप हमारी दोस्ती और हमारे रिलेशन भी थोड़ा आपके सामने बताता हूँ। तो हर सैटरडे को ये नमाज को जाता था, तो मैं उसकी शोरूम थी टीवी और उसके रिकॉर्डिंग रिपेयर की, मैं बैठता था उधर। अभी 7वीं 8वीं कक्षा के बाद में मेरे दिमाग में एक सवाल आना चालू हो गया, ये बंदा तो हर सैटरडे को मस्जिद में जाता है, मैं तो नहीं जाता हूँ। मैं महालक्ष्मी मंदिर में जाता हूँ, ये भी नहीं जाता है। तो वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। हमारी एक दूसरे से बहुत बार बात भी हुई। फिर उसके घर में मैं बैठा रहता था, कुछ लोग आके कान में कुछ बोल के जाते थे। मैंने बहुत उसको पूछता था, बहुत चले क्या बोलते हैं? एक दिन बोले, वो बोलते कुछ मत पढ़ो, कुछ मत करो, अब दिन में 5 बार नमाज पढ़ो, सब उसी में सब हो गया। बेवकूफ लोग हैं, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए तो मैं, तू यही रिएक्ट होगा इसलिए मैं तुम्हें बोलता नहीं था बोल। तो अपन कहाँ सुनते? आज वो भी एक मास्टर है,
4 लोगों की हेल्प करता है। अब कोरोना आ गया तो डॉक्टर खालिद ने और हमने मिलके कोई कास्ट देखा नहीं, रेस देखी नहीं, जात देखी नहीं, रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे वी वेर अवेलेबल फॉर दिस सोसाइटी। डॉक्टर सही बात है? तो दिस इज द एजुकेशन। कोरोना जिस दिन आ गया उसी दिन से फ्रॉम डे 1 12 मार्च 2020 से ये नौबत आ गई। उसी दिन से रात को 2 बजे 4 बजे हमारा स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि सेकंड वेव में व्हेन आई वाज इन ठाणे तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा शॉर्टेज, ऑक्सीजन बहुत मुसीबत, मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास। डॉक्टर्स नहीं थे, इंटेंसिविस्ट नहीं थे, साथ ही में कुछ ऑक्सीजन रखने के लिए वो ऑक्सीजन भी वो जो था क्रायोजेनिक रहता है, वो कोई ऐसा पानी में भर बॉटल में भर के रखा और बहुत दिन चलेगा ऐसा नहीं है। वो कुछ दिनों के बाद में निकल जाता, मतलब वो स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल। ऐसी परिस्थिति में जहां कुछ भी नहीं है वहां अस्पताल खोल दिए, तो अपना हौसला ही बुलंद था तभी लोगों को बचा पाए। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी भाई बहन हैं जहाँ पे भी अभी ग्रेजुएट हुए, भले वो कंप्यूटर में हुए, मैकेनिकल डिग्री में हुए, तो आप खुद को बहुत बड़ा एक सेटिस्फाइड होना मानना चाहिए कि यू गॉट द बेस्ट एजुकेशन इन दिस सच ए गुड सोसाइटी। इनके वैल्यूज, इनके एक फाउंडेशन बोलते हैं जिसका बहुत ही मजबूत है, कि बच्चों के पास कुछ फीस भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रही, तो भी बच्चे पढ़ेंगे। और इसी हैसियत से, इसी लाइन से, इसी फोकस से ये अपना ट्रस्ट आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन सिस्टम बढ़ रही। गॉड इज ऑलवेज ग्रेट। भगवान ने भी चाहा कि इसी के बाजू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आने दीजिए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू अपना जो कॉलेज का कैंपस है, जो कंपाउंड वॉल है, दैट इज कॉमन कंपाउंड वॉल ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग एंड कलसेकर महाविद्यालय। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि दैट परमिशन इज ग्रांटेड बाय मी। आई हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन एंड वो मैं भले ही यहाँ पे नहीं रहूंगा, लेकिन हमारा नाम उधर आपकी पीरियड में बिल्डिंग हो गई, बाजू में कलसेकर महाविद्यालय है और साथ ही में एक कैंपस, मतलब यहाँ पे अभी सर यहाँ पे नन ऑफ दी कमर्शियल एक्टिविटी विल कम हियर। ये टोटल अभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग रहेगा, एक कॉलेज कैंपस रहेगा, इसकी वैल्यूज, इसकी जो सेंटिटी है वो इसी तरीके से मेंटेन रहेगी। आई विश बेस्ट ऑफ द लक ऑल द पेरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। Thank you so much, sir. I would now request Dr. Zahir Qazi Sahab to read the oath to be repeated by graduates of computer and mechanical engineering. All the students are requested to rise in their seats for the oath. Are you all set? Okay. I vow to devote my professional life to the service of humankind through my profession. I will always focus on what I can innovate, invent, or discover for the creative, responsible, and economic development of my country. I will always remember that let not my wing days be spent in vain. I will set a great technological goal that will lead me to think high, work, and preserve to realize the goal. I will always follow the great scientific and technological minds, good teachers, and good books. I will work and work for removing the problems faced by planet Earth in areas of healthcare, water, energy, habitat, waste management,
an environment through the applications of science and technology. I will keep my national flag flying in my heart and will bring glory to my nation. I firmly believe that no problem can defeat me. I will become the captain of the problem and defeat the problem and succeed. Finally, I will strive to elevate my self esteem and dignity to such a lofty height as to realize the purpose of my creation on planet Earth. Now, you please be seated. Thank you. Thank you, sir. May I now request the head of Computer Engineering Department, Professor Tabrez Khan, to present the students of Computer Engineering for the award of degree. Kindly distribute the degrees. Assalamu alaikum. Good evening. I, Tabrez Khan, head of. Request the chairman to kindly distribute the degrees. Assalamu alaikum. Good evening. I, Tabrez Khan, head of Computer Engineering Department, present the students who have successfully completed degree program in Computer Engineering in the year 2021 for the award of degree certificate to the Chairman Board of Governors. They are the Chairman Board of Governors. They are Babel Altamash, Mehman Mohammad Sahil, Chaudhry Sabir Ali, Honbode Arfat, Khan Faisal, Khan Sahijad Ali, Khan Saif, Khan Zaid, Maharkar Salman, Matte Mehwish, Munna Anam, Mulla Ismail, Natik Apis, Sayyid Sania Kaleem, Sheikh Namira, Sheikh Adil, Sheikh Mumtaz Bano, Sheikh Rashid, शेरगांव का इफ़त, शेरगांव का इफ़त, अलमास अब्दुल रहीम,
अंसारी हमदान, अंसारी हीना, अंसारी मोहम्मद आमिर, अंसारी मोहम्मद आमिर, देशमुख राफिल, खलफे सज्जाद, लकड़ावाला आर्यन, लांबे माज, लांबे माज, मंसूरी अब्दुल रहमान, मोमिन फैजान, मोमिन सनफ, नाथानी आमिर, पटनी आमिर, सदोले अरफात, सैयद आलम आरा, शेख नौशीन, शेख फैयाज, शेख इकरा, शेख तनवीर आलम, शेख उबैद, सिद्दीकी दीशान, सुरमे हुदैफा, अंसारी मोहम्मद दानिश, खान गुलाम हैदर, मंसूर अली, पठान यूनुस, शेख मोहम्मद सैफ, सिद्दीकी मोहम्मद सोहेल, and Ansari Hina. Thank you. May I now request the head of Mechanical Engineering Department, Professor Dr. Asif Gandhi, to present the students of Mechanical Engineering for the award of degree by the chairman, and I request the chairman to kindly distribute the degrees.
A very good evening and salam alaikum to all of you. I, Dr. Mohammad Asif Gandhi, Head of Mechanical Engineering Department, present Asif Gandhi, Head of Mechanical Engineering Department, present the students who have successfully completed the degree program in Mechanical Engineering in the year 2020-21 for the award of degree certificates to the Chairman, Board of Governors. Ansari Arif Jamshid, Babar Nuresh Tulshiram, Baghdadi Abdul Rahman, Dokle Mohammad Ausaf, Jalgaonkar Shehzad Shaukat, Khan Ali Ahmed, Khan Umar Rais, Khan Mohammad Umar Rais, Malim Danish Salim, Mukri Umar A. Rashid, Pansare Akif, Patel Abdullah, Reddy J. Pratap, Shah Haris Saklen, Sheikh Zainuddin, Sheikh Abdul Ghani, Sheikh Arshad Abdul, Sheikh Basit Hussain, Sheikh Ghani Rizwan, Sheikh Miraj Mehtab, Sheikh Mohammad Saad, Shedge Samar Shahji, Verma Abhijit Arjun, Verma Ankit Kumar Amarnath, Yadav Janardhan, Bamne Saqib, Danse Sufyan, Gongre Pratik, Kadam Mayur Ratan, Khan Faisal, Khan Abdul Mujammil, Khan Asad,
खान मोहम्मद अदनान, खान मोहम्मद वसीम, कतरी मोहम्मद अली, मुल्ला मुस्तकीम, नाकवा महमूद, सैयद इल्तम इलियास, शेख शफीउल्लाह, सोलकर उमेर, उटेकर नंदिता, आफरित अली, अब्दुल अजीज जाकिर, अंसारी मोहम्मद अरबाज, अंसारी जैगाम, अंसारी अजहरुद्दीन, अंसारी मोहम्मद फहद, अंसारी मोहम्मद जीशान, मोहम्मद रिजवान, बानकोटकर साजिद, चौधरी फरहान, चौधरी नौशाद, चिलवान जिया, चौगले मुनीब, दबीर मसूद, काउचली सरमान, काजी इरशाद, काजी सलमान, खलीफा हसनैन, खान अल्तमश, खान फैजान, खान मुकर्रम, खान मुतस्सिम, खान सलमान, खान शाकिब, खान सुहेल, खान फरहान, खान मोहम्मद हफीजुर रहमान, खान नगमा, कोटकरी शोएब,
कोंडकरी अमान, कुडालकर मोइन, मंसूरी मोहम्मद, मंसूरी आसिफ, मंसूरी आसिफ, not there. Okay. मंसूरी मोहम्मद खालिद, मंसूरी मोहम्मद खालिद, मेचेरा अरफात, मेमन अब्दुल गनी, पटेल लबीद, पठान समीर, पठान समीर, पावने जोएब, पावने जोएब, पावस्कर सुफियान, पावेकर जैद, काजी खालिद, कुरैशी मोहम्मद रेहान, सैयद उमेर जाफर, सैयद मोहम्मद अबूजर, सैयद मोहम्मद नाज, शेख आकिब जावेद, शेख हाजिम, शेख शोएब, शेख शोएब मोहम्मद अयाज, शेख अब्दुल्ला, शेख आलिश अब्दुल मजीद, शेख आलिश अब्दुल मजीद, शेख हरीम शमीम, शेख जुनैद इलियास, शेख काशिफ परवेज, शेख काशिफ परवेज, शेख मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद सरवर, शेख राहिल अबीद, शेख शोएब आयूब, शेख शोएब आयूब, शेख तैयब गफ्फार, शेख वकास अहमद, सिद्दीकी जुल्फिकर रफीक,
Tamboli Noman, Thapa Chipman, Thonge Zaid, Tulve Mustafa, Garde Amar Rafi, Khan Haris, I request all the students to be seated in their position, please. Requesting everyone to be seated, please. Near the gate, students are waiting. Please be seated in your position. The photography session will begin when you. First of all, the photography session of computer engineering will happen, followed by mechanical. Now, I request Dr. Zahir Qazi Sahab, in his capacity as the chairman of the Board of Governors, Kalsekar Technical Campus of Anjuman Islam, to declare the degree distribution ceremony closed. We had a glorious morning, glorious afternoon, and equally glorious late evening. Very fascinating moments. And now we need to bring down the curtains. We have conferred the degrees on almost 650 students on average. On behalf of the Board of Governors, Kalsekar Technical Campus of Anjuman Islam, I declare the graduation ceremony closed. Thank you. May I now request the Dean of School of Pharmacy, Dr. Sharik Syed, to give the vote of thanks. Assalamu alaikum. A warm good evening to all of you. What an incredible day to close by. Seventh degree award ceremony on behalf of University of Mumbai. I have been given the honor and privilege to present the vote of thanks. So at the outset, we had some phenomenal guests today with us who had graced the occasion. To start with, in the morning time, we had Professor Anil Sastabuddhe Saab, who is the chairman of All India Council for Technical Education, who had connected us to virtually. And it is through his inspirational talk, he inspired students towards a bright future. Following in the evening today, we have with us Mr. Ganesh Deshmukh Saab, Commissioner of Panvel Municipal Corporation here. And he really connected with the students. He brought out his own story, and I'm sure students have inspired by him. I wouldn't have to talk much about it, but every time I listen to our Honorable President Saab, and you have listened to him for the first time, I've been listening to him for the last 3 sessions. It has been incredible and very inspiring, sir. And I'm sure about students, but at my level, I've been always inspired by what he says. Thank you, sir. Thank you for your time. Joining him is Mr. Akhil Hafiz Saab, Joint Secretary of Anjuman Islam. Thank you, sir, for coming over here. Mr. G.R. Sheikh Saab, General Secretary Anjuman Islam in absentia. Mr. Burhan Haris Saab, Executive Chairman, Board of Institution of Navi Mumbai. Mr. Iqbal Kawar Saab, Member, Board of Institution of Navi Mumbai. Mr. Abdul Razak Wagu Saab, Board Member, Anjuman Islam. Dr. Khalid, who is a well-wisher of Anjuman Islam. Mr. Shagaf Nakid is the CEO of Anjuman Islam. Mr. Ashraf Kalsekar, Member of Anjuman Islam. Mr. Akhil Adhikari Saab,
was well-wisher of Anjuman Islam, Mr. Khurshid Kapadia, the CFO of Anjuman Islam. This event like this could not be happened without a strong leadership and execution team at Kalsekar campus. So I would like to thank our very own director, Sir Dr. Abdul Razak Natagi, for all his leadership. Principal of Polytechnic, Mr. Ramzan Khatik Saab, Dean of Architecture, Raj Matre, along with him, Dr. Magar, who's Dean Academics, Professor Maruf, Controller of Examination, heads, controllers, staff, and students of AIKTC and RKP. Along with them, backing along at the back end where admins, officials, stores, auditorium, support staff. I thank once again. Thank you once again for a wonderful, incredible evening. Thank you so much. Thank you also. Thank you so much. And also to both of our anchors, Dr. Shahbaz and Rohan Das. Thank you so much. Thank you, sir. And may I now request everyone to rise in their seats for national anthem and remain standing till the academic procession led by the director leave the venue in procession. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you.